Yeah. So hello everyone. In this video series, we are going to learn about uh the karate series. Okay, we are going to start a karate series here. Here, like you are going to know a lot about karate. What is a karate framework? You must know. If you do not, I'm not going to just give you the introduction in this specific video. Ki what is a karate? Basically, just giving you a quick review. Karate is a framework. It's a automation framework, testing automation framework, through which you are able to test some scenarios and test cases, right? So yeah, in this video series, I'm going to tell you everything about karate. If you are a beginner, then this is the right place for you because we are going to set up the karate. Also, we are going to build some projects like either it is a Maven project or a Gradle project. I'm going to set up both the projects, and also we are going to run some test cases. We are also going to learn about the syntax, the BDD syntax, which is being used in karate, right? So everything we are going to do from the very scratch. So first of all, you need to know the prerequisites for learning karate. Okay, you need to know some of the prerequisites, that what is the thing which you need to learn. Okay, so yeah, moving ahead, first you should have the thing. You should have, one second, I need to uh, uh yeah, so you should have Java. Okay, you should have in Java in your system. Okay, you should have this. Now, don't get tensed if you're not a known programmer and if you do not know much about Java. Then let me tell you, you just need to set up it. You do not need to know the syntax or something. You do not need to know about it. Uh, One second, this is troubling me. Better to remain. Like, it means that you need Java to be set up in your system, but it is not like you should know the Java programming language, because karate is just using a simple English language or a BDD syntax to work with. Okay. Now Java should be set up. Now, if you are confused, like obviously अगर आपका system में Java है, आपको पता ही होगा कि Java आपके system में है या नहीं है. अगर आपको फिर भी doubt है, then you can just go to the command prompt and check the Java version. Okay, you can just go to the command prompt and check the Java. Okay, I'll just say Java minus version, hash version. So I'm just getting that the Java version is 11.0. It does mean that it is being set up in my computer. And the second thing which you require, should you have in your system, is the NIDE, and NIDE to set up a karate project. Okay, so you can have any of these three. You can have IntelliJ, you can have Eclipse, or you can have Visual Studio Code. Okay, you can have any of these three. But in this video, I'm going to set up the karate project, specifically a Maven project. I'm telling in this video, I'll be making a video on the Gradle project as well. But today in this video, I'm going to make the Gradle project on the Maven project, sorry. Okay, for that, you need IntelliJ to be set up in your system. So you can just, if you do not have, you can just go to the here you can go and write IntelliJ download, and you will see this first link. You can go and just download this community version. Okay, it will be fine. Then you have to just install it. Okay, now I'm just going to open this IntelliJ community version. And look, if you are new, then you have to select the new project. Okay, go to the new project or something. Okay, and I'll go to the new project. I'll just select Maven archetype. Okay, so there are two ways of creating a Maven project. You can create a Maven project with archetype, and you can create Maven project without archetype. Okay, so in this video, I'm going to make a simple Maven project without any archetype. Okay,
So so that you can get to know ki how dependencies are being working here and how the things are actually working. Okay, so this is the version which I am using here is like I am not being provided with Maven, going to Maven and select any version like with archetype and without archetype. I'm When I'm selecting Maven, it is already inbuilt with the archetype thing. But I want without archetype, so I'm going to go to select the new project and I'll give the name of the project. I'll just say first Maven without archetype. Just a random name I'm giving. Okay. Yeah. So I need to select where I need to do this. I have already selected. Okay. That I need to make this project in practice folder. The language I'm going to use is obviously Java because Karate is going to use Java, and there are three build systems, Maven, Gradle. IntelliJ is providing itself because if you're working with any other ID, it would not be there. But I want to select. Then if you are maybe making a project in the Eclipse or something, then you will just see Maven and Gradle. Then you have to select Maven and that is the reason I told you that you need to have the uh, JDK, uh, the Java setup in your system because it is required. If you are making a Maven project, obviously it is related to Karate framework. Then you need, because Karate is based on Java language itself. So you need JDK setup in your computer and in your system or whatever you're using. So you can select the JDK version and just create the project. Now it is such a simple project. You are done with the creation of the a Maven project, but without archetype. Okay, it does not have any dependencies. So for dependencies, we are going to use we are going to use karate. Right, this is a karate project basically. So we need some dependencies with named. Okay, so for that I need to have a section in this form.xml file. You can see here multiple files, right? There it is. In this project, you are going to have this idea file and src. In src, you are just having main, which is having Java and resources and test. Okay, so basically, let me tell you that main is something where your project's actual code is going to stay, and test is for the code, like automated code which is going to test your particular project, right? That is going, and we are going to work with this folder only, right? Because we are actually automating the testing, right? Okay, so we need, and in this form.xml, it is going to manage with all the dependencies. So for that, I need to add this section dependencies and I need to add some of the karate dependencies. So I'll go to the Maven, like Maven repository, because it's a Maven project. So it will have some Maven, Maven will have its own karate dependencies. So I'll write karate. It is just showing up automatically. Okay, I need to add this Karate Core, Karate Apache, and Karate JUnit as of now. You can skip Karate Apache. I'm not going to add these. I'm just going to add these two, Karate Core and Karate JUnit. Okay. Maybe it is going to take much time. Okay, so you can see here that there is a version, the latest version which I'm seeing is this one. I'm going to select it, and it depends on dependency, depends on the project which you are working. Are you working with the Gradle one? You will see different dependencies, and for Maven you can see this. So I'll just copy it. Okay, I'll just copy it and I'm going to paste it in the form.xml file. Okay, done. And you can just refresh it. You can see here load Maven changes. I leave it like load it, and you can see here that in the build option, you can see here it is build. So it is already built. Okay, now you need one more few, you know yeah, you need few more dependencies, like I told you about the JUnit dependency. You need to add that as well. Okay,
This was karate core. I need to add this karate JUnit dependency. I will add this. I'll copy it, Control C, and I will paste it in the dependencies section with a little space in it. And then I will load the Maven changes. Okay. And you can see going to the build, it is already built, I guess. Yes, done with this. Now, the main thing starts. What you have to do, you have to go to the Java folder where you need to have a feature file. Feature file is nothing a kind of features. Uh, you are in the feature file, you are going to write this feature and the scenarios. Scenarios is nothing in a very basic language. You can assume that scenarios are the test which is to be run. Right, we are just specifying कि अगर ये चीज होगी then you have to check this, and if it is okay, then like this should be the, if this is a case, then then this should be the status, or this should be something, the result should be, if this is the, how do we check the things when we start coding. तो हम यही करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर input is this, then output should be this is our manual testing. हम check कर लेते हैं, input ये है, हाँ output ऐसा आना चाहिए था, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, right? But in the automation, how we do it, using these things only, these frameworks only. And in those framework, in karate framework, we have some features files, and feature files will be having some test cases written already. They are already going to check कि हाँ अगर ये चीज हो रही है तो ये आउटपुट आना चाहिए, यानी ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, या ये स्टेटस कोड आना चाहिए. So let's make a new feature file. Okay, I'm going to make a file with, okay, feature file should have a extension called feature, right? I hope you know. So first feature file, I will say feature.feature. This is a very important thing, that you should have dot feature already in here. Now, this is the thing, if you are first time running this feature files, or you are setuping this project first time, if you're very new, then you should know about a plugin called Cucumber plugin. You can see here this green symbol, which may be or maybe not visible on your system. Maybe it will be visible, but you would not be having this run feature first feature like while on right clicking this particular file, you will not be able to see. So if you want to see, what you have to go to the file and go to the settings, then you will see this plugins. You have to go to plugins, and then you have to search for Cucumber for Java. Here it is showing installed, but on your system, if you have not installed it already, then you will see this kind of green symbol, and then you have to click it and it will be installed, and you have to say okay. Okay, now let me write a feature file. Okay, so for writing a feature file, a very important keyword which you should know is a feature. You have to name this feature file. So I'll just say that a sample feature file. First feature file for Vidushi. Okay. Yeah. And now another very important keyword is this scenario. This scenario is kind of like we can suppose like test 1, test 2. हम कह देते हैं ना कि ये हमारा test number 1 है, test case number 1. Scenario is nothing but the test case. ठीक है, तो we have to name this scenario कि scenario हम क्या बोलते हैं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में. what does it mean? Scenario does mean that a simple case, या कुछ ऐसा हुआ, एक scene, right? So scenario is basically a scene for the test cases, right? So I'm going to run a simple get API. Right? Hit test simple get API. Okay. For that, now three very important keyword is given: when it is not getting colored, and then. Okay, these are very important three keywords. Like अगर किया दिया ये होगा, given क्या चीज होगी. अब APIs क्या होते हैं? It is all based upon URLs, right? तो you should give the URL of the API. तो वो दिया होगा. अब
नाउ यू हैव टू से कि अगर क्या होता है, अगर ये वाला मेथड होता है, अगर मेथड यू मस्ट नो कि मेथड एचटीटीपी मेथड्स होते हैं गेट, पोस्ट, पुश एंड पुट, sorry not push, get, post, put, delete, all these are update, all these are http methods. तो अगर उसमें से कोई मेथड होता है देन क्या होना चाहिए, तो ये तीन चीजें हैं. So I'm going to show you a sample URL. You can also try these URL. You can yeah, you can just go to the reqres kind of it is a very it is kind of a very sample APIs provider. So you can go to this request so that you can get the a full API, full URL. You can go and copy it. Like what I did double clicked it. Okay, I double clicked it. I went here, I double clicked it and I got this full URL. I will copy it. मैं इसे copy करूंगी और मैं इसे यहाँ given URL का भी एक keyword है which is already fixed, which is already being booked. ठीक है, in the karate और in the feature files. URL का मतलब ये URL ही समझेगा. URL को आप ऐसे कोई as a वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हो. यूआरएल का मतलब ये कुछ फिक्स ही मतलब समझेगा कि ये यूआरएल है. ओके, आई हैव गिवन यूआरएल. अब मैं इसे कहूंगी कि अगर मेथड मेरा गेट है, बिकॉज इट्स यू कैन सी हियर आल्सो कि ये जो एपीआई थी ये गेट मेथड के लिए थी, है ना, ये गेट के लिए थी. तो आपको ये बताना है कि अगर मेथड जो है गेट है, ठीक है, मेथड अगर गेट है और अगर स्टेटस, तो स्टेटस मतलब अगर मेथड गेट डाल रही हूँ तो स्टेटस मेरा 200 आना चाहिए. ठीक है, दिस इज माय, देन दिस इज अ फीचर फाइल, दिस इज अ सिनेरियो. ओके, अब मैंने इतना बोल दिया कि अगर मेरा मेथड गेट है तो देन स्टेटस शुड बी, देन का मतलब शुड बी ही होता है कि ये चीज होनी चाहिए. नाउ व्हाट विल आई गो डू, आई हैव ऑल दिस गेट ऑलरेडी सेव. तो मैं क्या करूंगी, रन करूंगी फीचर फाइल को और ओके डन. आई गेस इट इज वर्किंग फाइन. हाँ, तो मुझे यहाँ पर एक फीचर फाइल मिल जाएगी, मतलब मेरी फीचर फाइल जो है विद दिस सिनेरियो वन ओनली, तो ये रन हो चुकी है. राइट, तो मैं इसके अंदर, इट्स अ वेरी बिग फाइल, इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो मैं जो दिखाना, मैं इसमें आपको एक चीज आई वांट टू शो यू. आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ. ये रहा. Okay, I wanted to show you this one. Ki you can see that there are one scenarios wishing a beautiful. Okay, yeah. Sorry. Okay, there were scenarios. Okay, there were scenarios. There are total number of scenario is one. Number of cases passed is one. कि one scenarios थे और कितने scenarios pass हो गए, one scenario pass हो गए, और कितने fail हुए, zero fail हुए. Rest of these things are also important. If you want to search about it, then you can also search about it. You don't have to bother about these things. Okay, अब मैं इसको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज दिखाती हूँ आपको. ओके, दे हैव सेड कि अगर आपको इसकी HTML रिपोर्ट चाहिए तो आप इसको रन कर सकते हो. आप ये एक ये हमें क्या दे रखा है, पाथ दे रखा है विच इज वेरी मच विजिबल टू यू. कि इस पे जाओगे यूजर्स, मेरा ये प्रैक्टिस फोल्डर था जिसमें मैंने अपनी नई फाइल बनाई है कॉल्ड फर्स्ट मेवन विदाउट आर्केटाइप. फिर उसके अंदर आई कैन सी हियर टारगेट फोल्डर बन गया, पहले नहीं था, अभी बना जब मैंने इसे रन किया. उसके बाद वी हैव यहाँ पे कराटे रिपोर्ट्स. तो आई विल गो टू दिस कराटे रिपोर्ट्स. राइट, कराटे रिपोर्ट्स पे गए, कराटे रिपोर्ट्स पे गए और वहां पर कराटे समरी डॉट HTML है. अब मैं इसको रन कर सकती हूँ. राइट क्लिक करा मैंने, इसे ओपन इन किया, मैंने ब्राउजर पे गई और मैंने इसे अपने ब्राउजर में ओपन कर लिया. आप एक चीज और कर सकते हो. ये कराटे टाइमलाइन ऑन हो गया आई गेस. ठीक है, कराटे टाइमलाइन नहीं चाहिए मुझे, मुझे कराटे रिपोर्ट्स चाहिए. तो मैंने शायद गलत राइट क्लिक कर दिया. हाँ, कराटे टाइमलाइन कर लिया, मुझे कराटे समरी चाहिए. ठीक है, कराटे समरी डॉट HTML है. मैं इसे राइट क्लिक करूंगी, ओपन इन करूंगी, ब्राउजर्स पे जाऊंगी, कोई भी ब्राउजर चूज कर सकती हूँ. तो मैंने इसे, ये आ गया मेरे पास. इफ यू वांट टू डोंट वांट टू गो डू लाइक दिस, देन यू कैन आल्सो कॉपी द गिवन लिंक. यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हो और इसे अपने ब्राउजर में पेस्ट करोगे तब भी हो जाएगा.
ओके, तो अब मैंने क्या किया, मैंने समरी देख ली, तो यहाँ पर दिख रहा है जीरो का ये रेड कलर है, यानी कितनी हमारी फीचर्स जो हैं, कितने फीचर्स हमारे फेल हुए हैं और कितने फीचर हमारे पास हुए हैं, ये फीचर्स बता रहा है। ये गिवन मेरा फीचर, तो मैं इस फीचर पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे हमें सिनारियोस दिखा रहा है, पहले यहाँ पे फीचर्स थे, अब सिनारियोस हैं, तो कितने सिनारियो फेल हुए और कितने सिनारियोस पास हुए, वो 1 सिनारियो पास हो गया और 0 फेल हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज इट। अब व्हेन आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अ वेरी सिंपल, यू हैव एक्चुअली सेटअप और मेड अ मेवन प्रोजेक्ट। आपने कराटे का एक फ्रेमवर्क सेटअप कर लिया, कराटे का एक प्रोजेक्ट यू हैव डन, यू आर डन विद इट। तो आपसे कोई पूछे आपने कराटे प्रोजेक्ट बनाया है, देन यू कैन से यस आई हैव मेड। ओके, तो ये था विदाउट archetype. You can also make with archetype, but I do prefer without archetype, because you archetype is nothing, is nothing, but you are already adding the dependencies. If you can want to add the dependencies manually, तो आपको archetype की जरूरत नहीं है पहले से ही। but if you want to, you do not want to add the dependencies अलग से, तो आप चाहते हो कि मेरा बन के ही आए प्रोजेक्ट, आई डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द डिपेंडेंसीज, मुझे ढूंढनी ना पड़े मेवन रिपोजिटरी पर जाकर, तो आप विद आर्किटाइप उसमें कराट जो आर्किटाइप का है वो आप, आई कैन शो यू इधर अगर टाइम है, मतलब दिस इज विदाउट आर्किटाइप इज ओवर। इफ यू वांट टू एंड दिस वीडियो देन यू कैन, बट इफ यू वांट टू सी, तो मैं आपको बता सकती हूँ करके थोड़ा, इट इज नॉट मच। ओके, तो दिस इज मेवन आर्किटाइप, तो मैं इस पर जाऊंगी, इसको मैंने दिया फर्स्ट मेवन विद आर्किटाइप। ओके, नॉट टेकिंग मच टाइम। यहाँ पे आपने वही फोल्डर सिलेक्ट करना, लोकेशन जेडीके आपका सिलेक्ट होना चाहिए। अब ऐड आर्किटाइप पे जाएंगे, तो मैं इसके अंदर दे दूंगी com डॉट इंट्यूट डॉट कराटे। ओके, तो यहाँ पे वी कैन गिव दी आर्टिफैक्ट आईडी, तो you can give the artifact ID. Okay, so the artifact ID I will give karate archetype. I hope I'm writing the correct spelling, and you can add. Okay, now you will go to create a new window. Okay, so now you can see that it is नाउ हमने क्या किया था, जब हमने विदाउट आर्कीटाइप हमने सेटअप किया, तो देर वॉज नॉट एनीथिंग रनिंग और बिल्डिंग, राइट। पर अब हमने इसको विद आर्कीटाइप किया है, तो ये अपने आप सारी रिपोजिटरीज को डाउनलोड कर रहा है और सेटअप कर रहा है। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज दिस, कुड नॉट फाइंड, मैंने कोई गलत स्पेलिंग दे दिया आई गेस, मे बी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मैंने ना कोई गलत स्पेलिंग दी है, लेट मी मेक इट अगेन आई गेस। ठीक है, let me do something. First Maven uh with archetype, I told you ना कि मैंने शायद गलत दे रखा है, तो मैं इसको चेंज करके 2 कर दूंगी। और जेडीके मेरा सिलेक्टेड है, और ऐड करना है मुझे आर्केटाइप को, राइट। तो लेट्स सी कि अब मैं कोई गलती ना करूं, तो कॉम डॉट कर टू इन टी यू आई टी इंट्यूट डॉट कराटे, एंड देन कराटे आर्की was it same or something, पता नहीं। Need to add the version 1.0.0, is this the right one version, is this the right version or not? Okay, then let's add it. I hope, cross fingers, it will work now. I am writing the right spellings or not. Okay, it is done. It is right, I guess. Now let's create it. This window only. I am cross fingering कि चल जाए, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
I guess this is right. So let's see, generating project in batch mode. Okay, done. Yes, project finished with exit 0. So all things are set up. Now you can see, going to it, you will see this already things. You were saying कि पहले जब हमने वो without archetype बनाया था, तो हमने सोर्स पे गए थे, तो हमारे पास एक मेन फोल्डर था और टेस्ट फोल्डर था. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टेस्ट फोल्डर आया है, दैट टू विद जावा बना हुआ है. उसके अंदर वी हैव एग्जांपल्स का फोल्डर, उसमें भी आप यूजर्स का फोल्डर, उसमें ऑलरेडी एक फीचर फाइल है. ठीक है, यू कैन सी ऑलरेडी फीचर फाइल है. तो आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन यू दिस, बट इफ यू डू नॉट, आई विल नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. बट यू कैन सी, मैंने आपको बताया था फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप अपने फीचर को नाम देते हो. बैकग्राउंड क्या है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम अपना गेट एपीआई, जो हमारी एक्चुअल एक फर्स्ट गेट एपीआई को अच्छे से हैंड्स ऑन करेंगे, तब हम देखेंगे उसे. बट लेट मी टेल यू इन दिस एज वेल कि बैकग्राउंड कुछ नहीं है. बैकग्राउंड इज अ प्रोसेस और विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम विदाउट, लाइक बिफोर एवरी सिनेरियो. मतलब एक फीचर के अंदर मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, तो देयर can be multiple scenarios in one feature file. So before executing a particular scenario, the background will be executed for sure. तो अभी मैं इस सिनारियो को रन कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड विल ऑटोमेटिकली बी कॉल्ड. ओके, और मैं इस सिनारियो को कॉल कर रही हूँ तो बैकग्राउंड भी कॉल होगा. तो बैकग्राउंड इज द फाइल विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एवरी सिनारियो. ओके, तो लेट्स ट्राई इट. I'll run this feature dot users dot feature and going to build. तो ये हो चुका. Yes, I guess it is fine because मैंने नहीं लिखा, so it will definitely be running properly. Okay, so let's check this. Open in Chrome. अब मैंने इसको वहां पे नहीं गई, और अब देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारे पास एक फीचर है and name of the feature is karate. Need to refresh. Sample karate test script. Because you can see here the name of the feature was sample karate test script, right? Moving back to the Chrome and going to this feature, you will see two scenarios. I told you, right? तो एक फीचर फाइल में मल्टीपल सिनेरियोस हो सकते हैं. तो यू कैन सी बैकग्राउंड यहाँ पर भी है, इस सिनेरियो के आगे भी, और बैकग्राउंड इस सिनेरियो के भी आगे है. So because scenario is something, background is something which is going to be executed before each and every scenario. So you can see both the cases are getting passed. So that's it. हमने with archetype और without archetype दोनों बना लिए हैं. So if you like this video and want to learn about more amazing karate things, then you can just join the series and continue and just be pro at karate. Because अगर आप थोड़ा साथ साथ करोगे, then you will definitely going to do things. अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, इसके अंदर यूजर्स डॉट रनर है. ये क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज फॉर अगर आप देखो, मेरी एक फीचर फाइल में मेरे पास एक फीचर फाइल है, उसमें मेरे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं, और मेरे पास फीचर फाइल्स भी बहुत सारी हो सकती हैं. तो मुझे कुछ मैंने एक साथ बहुत सारी फीचर फाइल्स रन करनी है, पर उन फीचर फाइल्स के अंदर मुझे कुछ पर्टिकुलर ही सिनेरियोस रन कर रहे हैं. तो मैं उसको कैसे करूंगी? अब मैं एक साथ सबको ऐसे नहीं कर सकती हूँ ना, कि एक एक करके नहीं रन कर सकती हूँ. दे विल, अगर मैं एक एक करके रन करूंगी तो वो एक साथ नहीं रन करेंगे सारी फाइल्स. मुझे एक साथ रन करनी है, देन आई विल मेक अ यूजर्स रनर डॉट जावा फाइल. तो ये क्या करेगी, ये टैग्स के अकॉर्डिंग सारे को एक साथ रन कर देगी, हर फीचर फाइल को एक साथ रन कर देगी. या मैं टैग डिफाइन कर दूंगी तो उस हिसाब से. तो इट इज गोइंग टू मैनेज द फीचर फाइल्स व्हाइल रनिंग. ओके, so that's it. And thank you for watching this video, and also share the video if you know someone who is learning karate. Yeah, thank you so much. Bye bye.